We started with thermal expansion. First of all, what do we mean by thermal expansion? हीट देने के बाद एक्सपांड होता है. Expansion और is shrink. so what's the definition here? कूल होने के. The increase in the length, or when a solid is heated, it expands in all direction. The increase in length of solid is called what expansion? First type of expansion, मैंने three type of expansion बताया. First type was linear expansion. Linear expansion was expansion in terms of what? Length. फिर एरिया का भी बताया. हाँ. So one in terms of, if the expansion is in terms of area, it is called superficial expansion. किस में होता है superficial expansion? मेटालिक प्लेट में. हाँ, basically a plate with some area, वहाँ पर हम आता है superficial expansion. We have this here. Hi. And third type of expansion was volume. cubical expansion. This expansion was in terms of what? Area. नहीं. Volume. How are you, ma'am? Fine. Your voice is still not. No, it will take time. 1 month it will take. I can't take such a long break. मैम आवाज है कुछ नहीं लग रहा. Okay, but there are some exceptions. ये exception वाला part 3 चीज है exception. You remember that because exam में आ सकता है कि which object or what substance instead of expanding on heating it contracts on heating. मतलब normally all substance on heating it will expand, but some substance at some temperature range it will, instead of expanding on heating, it will contract on heating. So the exceptions are first, water in between range 0 degree Celsius to 4 degree Celsius. मतलब वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस में हीट करने में इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग. अंडरस्टूड? नॉर्मली एक्सपैंड होना चाहिए ना हीट करने में, बट वाटर फ्रॉम 0 to 4 डिग्री सेल्सियस इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स. सिर्फ इसी रेंज में, हाँ, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस में. नेक्स्ट एग्जांपल इज सिल्वर आयोडाइड. Silver iodide also iodide. Silver iodide in the temperature range 80 degree Celsius to 141 degree Celsius. इस range में this will show opposite nature. Like instead of expanding on heating, it will contract on heating. And third one is सिलिका. सिलिका का ये नेचर आता है बिलो -80 डिग्री सेल्सियस. माइनस है नेगेटिव. मैंने कल बोला था कि 0 से नीचे टेम्परेचर नहीं होता है, बट दैट इज इन केल्विन. जब डिग्री सेल्सियस में है वी कैन कंसीडर इट इन नेगेटिव. ठीक है? सो दिस 3 आर द exceptions which shows some different properties, different nature between those particular temperature range. समझ में? ये 3 आपको पक्का याद रखना है, एग्जाम में आते हैं बहुत फेवरेट क्वेश्चन. पेज नंबर 109 थर्मल एक्सपेंशन. यहाँ पे this one. ठीक है? So these 3 points you have to remember with temperature range. खाली नाम नहीं याद रखना, with temperature range you have to remember this. याद रहेगा? बोलो एक बार. वाटर 0 to
4 degree Celsius. Silver iodide to 141 degrees 80 degree Celsius to 141 degree. Silica below 80 80 degrees. below 80 minus 80, minus. not 80, below minus 80 degree Celsius. अब मैं ये रब करूँगी. I need you to tell this now without watching. Okay, now tell me. Water. 0 to 4 0 degrees to 4 Celsius. degrees Celsius. हाँ, next second one was 80 degrees नाम Celsius. तो बोलो. Silver iodide. Silver Silver iodide. iodide. 80 degrees Celsius to 141 degrees Celsius. And third one was Silica minus 80 degrees. below minus 1. Below minus 80 degrees Celsius. Okay. Okay. Now explanation of thermal expansion on solids on the basis of molecular motion. This I will ask at the last. Again I will ask this 3. पूरा चैप्टर होने के बाद ना I will again ask this 3 points. अभी जो पूछा. ठीक है. Explanation of thermal expansion of solid on the basis of molecular motion. So on heating क्या हो जाएगा? Average kinetic energy of molecule of the solid will increase or decrease on heating. हीटिंग में इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा काइनेटिक एनर्जी? Kinetic energy increase होगा. इंक्रीज होगा ना. Potential decrease होगा. They start vibrating about their mean position with a larger amplitude. The result is that their mean position change such that intermolecular separation increase हो जाता है, due to which this expands. Solid expands equally in all directions. So we have discussed about ring and ball experiment. Yes. रिंग एंड बॉल एक्सपेरिमेंट में क्या हो जाता था? Ring. Initially the ball, that sphere passes through the ring easily. Easily pass हो रहा था. Now if I heat this sphere and then try to Drop. बाबू cubicle put में आएगा that ना. sphere from, Here. हाँ, it will be cubical expansion because वहाँ पे Volume full all सब sides बढ़ से रहा है. all dimensions से it is expanding, so it is volumetric expansion, so it is cubical expansion. ठीक है. Second example experiment is bar and gauge. In your textbook you can see next page, page number 110. So bar and gauge experiment में the left one with handle is called gauge and this one is called bar. This one, this is called gauge and this is called bar. Now initially this bar can easily fit inside that gauge, but if I heat that bar क्या हो जाएगा? The size of bar will increase. Once the size of bar is increased, we won't be able to fit it inside the gauge. So that is the second experiment. Now linear expansion depends on 3 factors. Linear expansion depends on 3 factors. बताओ क्या हो जाएगा? अभी length के terms में है, so it will be first it depends on original length of the solid. और फिर Second है heat provided. heat provided, at least you can say it is the temperature. Original temperature of the solid, and third is material. Different material. For example, copper ज़्यादा Yes. जल्दी expand होगा. Material of the solid. So first dependence of original length. If I ask you कि कैसा dependence है, so it will be longer the rod, greater is the increase in the length of your solid. So अगर पहले ही initially मेरे पास long rod है and if I heat that rod, it will increase more. Instead same material का अगर मेरे पास short rod है, then it will increase less. Second is dependence on the increase in temperature. Definitely we know if I increase the temperature, if I increase the heat, so it will increase more. Length will increase more. अगर heat कम दिया, temperature कम है, तो length will increase less. Next is material of the body. So we say that different material have different melting point, different boiling point. Similarly, different material will expand differently for particular given temperature. Melting point के जितना पास जाएगा उतना हम तो for ऐसा दे सकते हैं कि melting point, for example, melting point उसका 80 डिग्री सेल्सियस का ऐसा दे सकते हैं कि assume that melting point 80 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो फिर लेंथ कितना बढ़ेगा ऐसा दे सकते हैं? ऐसा क्वेश्चन रहेगा नहीं पहली बात तो, और यहाँ पे हम जब लेंथ का इंक्रीज बात कर रहे हैं, वी आर नॉट स्पीकिंग अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअली, बिकॉज लेंथ इंक्रीज होने के लिए नॉट नेसेसरी कि वो मेल्टिंग पॉइंट तक रीच होना है.
उसके पहले भी वो हाँ, पर increase हो सकता है। रीच हुआ तो कितना इंक्रीज होगा ऐसा नहीं? एक बार मेल्टिंग पॉइंट में रीच हो गया तो फिर वो तो शेप ही चेंज हो जाएगा ना, तब तो वो रॉड ही नहीं रहेगा वो। अब हम पर वो assume किया कि मेल्ट ही हो रहा है। ऐसे assumption कैसे कर सकते हैं? अगर मेल्टिंग पॉइंट में रीच हो गया मींस इट विल स्टार्ट मेल्टिंग ना, right? Okay. So if we heat two rods of same length but one of copper and other of iron at the same temperature, we find that copper rod expands more than the iron rod. The increase in length of copper rod is nearly 3/2 times the increase in length of iron. Thus, increase in length of rod depends on material of the rod. अब this property of increase, this different material have different expansion is used in bimetallic strip या फिर उसको हम thermostat भी बोलते हैं। Thermostat में we have two metallic strip connected to each other which consist of two rods of same length but of different material riveted together. Riveted means joined together, ठीक है? किसी इसके थ्रू रिवेट एक्चुअली क्या होता है ना, दो इसमें एक स्क्रू टाइप जैसा रहता है उसके थ्रू हम जॉइन करते हैं। अगर मैं ऐसे देखूं ना तो यहाँ पे एक इसके थ्रू वो जॉइन करते हैं ना, उसको रिवेट बोलते हैं। ओके ठीक है? रिवेटेड टुगेदर is commonly used in thermostat. अब thermostat कहाँ पे यूज होता है? It is used in gadgets like refrigerator, electric iron, oven, geyser, जहाँ पे भी heating होता है, ये सब डिवाइस में heating हो रहा है, iron में भी heating होता है, oven, geyser, सब जगह पे heating हो रहा है। So अगर एक particular temperature से ज़्यादा heat हो गया तो क्या हो जाएगा? वन ऑफ दैट, दोनों में से दोनों आयरन रॉड को, दोनों आयरन रॉड नहीं है, दो अलग रॉड है, उसमें से एक क्या हो जाएगा? एक्सपैंड हो जाएगा और दूसरा वाला कम एक्सपैंड होगा। तो क्या हो जाएगा? ये एक्सपैंड होने के बाद में ये इस साइड अगर एक्सपैंड हो गया, इन दोनों के बीच का कनेक्शन टूट जाता है। हाँ, तो टेम्परेचर बढ़ा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। हाँ, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है? A thermostat is a device used to control temperature by closing and opening the circuit. Thermostat is used in electrical gadgets like refrigerator, electric iron, oven, geyser, etc. Next is the increasing length of rod on heating does not depend whether it is hollow or solid. Length पे depend हो रहा है। अगर same length का मैंने एक hollow rod भी ले लिया तो भी मटेरियल पे डिपेंड करेगा। हाँ, और अगर solid rod ले लिया, this is my solid जो पूरा completely filled है, and this is hollow जो बीच में ऐसा पाइप जैसा है, ठीक है? Even though they are not, this is completely filled and this is not completely filled, but दोनों का length same है। लेंथ सेम है पर तो भी मैम एटम्स ज्यादा राइट वाले में है। एटम्स है, लेकिन एक्चुअली हीट जब ट्रांसफर कर रहे हैं ना तो वो मटेरियल सेम है तो दोनों एक ही से एक्सपांड करेंगे, पर राइट वाले में एटम्स ज्यादा हैं। एटम्स ज्यादा है, बट वो बोलते सरफेस के जब बाहर के हीट हमेशा पहले बाहर को लगेगा ना, तो वो पहले एक्सपैंड हो रहा है ना, तो उसके हिसाब से हो रहा है, अंदर का उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। वो बाद में जाके जब मेल्टिंग होता है तब वो उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है? So this was about linear expansion. Now, if L0 is the length of rod at 0 degrees Celsius, at 0 degrees Celsius, and LT is the length of rod at T degrees Celsius, then the expansion increase in length. Increase in length को हम लोग क्या बोलेंगे? Initial length minus नहीं, sorry, final length minus initial length. Final length minus original length, क्योंकि बाद में increase हो रहा है, so you can say increase in length that is LT minus L0 is equals to yes बोलो क्या हो जाएगा? LT कितना बड़ा हो समझो L0 into alpha T, where L0 तो original length है, alpha is called coefficient of linear expansion and this depend on the material. अलग-अलग material का coefficient of linear expansion will be different because of what it will expand differently. So alpha is coefficient of linear expansion. So ये equation याद रहेगा, LT minus L0 that is increase in length equals to
original length multiplied by alpha into T. T is temperature. ठीक है? At T degree Celsius तो T is the temperature. हाँ वही increasing length मिलेगा ना उससे मान लो। हाँ increasing length मिलेगा। ठीक है? Okay. Now some substance, some things don't expand more. मतलब negligible expand. ऐसे नहीं मैं बोलूँगी कि expand ही नहीं होता। Expand होता है बहुत कम होता है। So we have first example is inware. ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि question will be explained why the pendulum of a clock is made up of inware. Explain why. वो पेंडुलम आता था याद है सिंपल पेंडुलम है ना, उसके नीचे पेंडुलम में इनवर का मटेरियल से बना हुआ ये लगाते हैं हम लोग। एक्चुअली वो जो रहता था ना पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम, उसमें इट डिपेंड्स कि कितना टाइम ये घूम रहा है, कितना वो फ्रीक्वेंसी में पेंडुलम घूम रहा है उतना टाइम हम लोग काउंट करते थे, राइट। नाउ एक्चुअली पेंडुलम का जो है टाइम पीरियड is equals to 2 pi root of L upon G. Now this is not here for your class 8 but ये 9th में आ जाएगा, आपको फर्स्ट चैप्टर में ही मिल जाएगा। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हम लोग यूज करते हैं यूजिंग दिस फार्मूला root of L upon G where L is the length of the pendulum. लेंथ मतलब अगर पेंडुलम का एक थ्रेड से मैंने वो पार्ट ज्वाइन किया स्फीयर, सो लेंथ हम जो बोलते हैं वो लेंथ ऑफ थ्रेड प्लस इसका मिडिल तक का जो लेंथ रहेगा, दैट इज द लेंथ वी कंसीडर। नाउ इफ दिस इज मेड अप ऑफ सम ऑब्जेक्ट जो हीटिंग में अगर उसका एक्सपेंशन हो रहा है तो फिर समर में अलग टाइम दिखाएगा, विंटर में अलग टाइम दिखाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसका लेंथ बढ़ जाएगा समर में, नेग्लिजिबल है वो लगा तो इसलिए वी यूज इनवर। Invar is a substance, invar is an alloy which almost does not expand on heating. Almost does not expand on heating. So to prevent from time loss because of the expansion of the this bob, इसको हम bob बोलते हैं। This part is called bob. Bob is here at our class. बाद में मैम दिखा देगी next time। ठीक है? So that is made up of invar. Next we also have one more thing, pyrex glass also expand negligibly on heating, इसलिए हम ओवन में सब यूज करने के लिए pyrex glass यूज करते हैं ओवन के अंदर रखने के लिए। So next example is pyrex glass। ठीक है, so ये दो आप चीज याद रखोगे जो ऑन हीटिंग नेग्लिजिबल एक्सपेंशन होता है। नॉर्मल ग्लास है उसे थिक ग्लास रहता है ना थोड़ा। हाँ, उसका कुछ पर्टिकुलर ये थिकनेस और कुछ पर्टिकुलर ये इससे बनाते हैं, प्रॉपर्टीज अलग रहता है नॉर्मल, थोड़ा अलग रहता है, मुझे भी इतना उसको पता है। ठीक है, सो फर्स्ट इज इनवर एंड अदर इज pyrex glass। तो ये तीन चीजें आपको याद रखना है। पहले तो इनवर pyrex glass, हाँ इनवर pyrex glass याद रखोगे, ये इक्वेशन याद रखोगे एंड वो 3 पॉइंट्स जो those 3 which were exceptions that you will be remember. Clear with clear expansion? Now we move to superficial expansion. So second one is superficial expansion. Superficial expansion was expansion in terms of what? area, temperature provided with कंटिन्यू हो रहा है या ब्रेक करनी करना है? ठीक है, रुक जाओ फिर। हाँ, okay. Now moving to superficial expansion, just like linear expansion, superficial expansion also depends on first क्या हो जाएगा वहाँ पे ओरिजिनल लेंथ था, original area, more is the original area, more will be the expansion. Second is increasing temperature, so that is if I increase the temperature more will be the expansion, and third is material of the object or substance.
ठीक है, material of the plate. So initial area of the plate, larger the initial area of plate, more will be the increase in its area or heating. Increase in temperature, more is the rise in temperature, more will be the increase in area of the plate. And final material of the plate में a brass plate expands more than iron plate of same dimension for the same rise in temperature. Therefore, it depends on the material. अब जैसे हमने लीनियर टेम्परेचर लेंथ ओरिजिनल लेंथ से हमने रिलेट करके इक्वेशन बनाया था, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, increase in area, that is A is T minus A0. AT is the area and temperature T degree Celsius. minus AO is A Original at area. the 0 degree Celsius. T degree Celsius में 0 degree Celsius. Which is equals to, हमेशा हम लोग रिलेट करेंगे with original that is 0 degree Celsius के साथ into beta T, where beta is the coefficient of superficial expansion. यहाँ पे coefficient of linear expansion था, this is coefficient of superficial expansion. Same formula है, just L के जगह पे A आ गया and alpha के जगह पे beta. ठीक है? Okay, next one is what? This is only about superficial expansion, that's it. And third part was which one?